सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जैसे कि हम आज प्रिपेयर करने लगे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में टू टाइप की स्टेटमेंट होती है। फाइनल अकाउंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। सो हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टाइप के हैं, एक है इनकम स्टेटमेंट और एक है पोजीशन स्टेटमेंट। जो इनकम स्टेटमेंट है वो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट जो है वो है हमारी बैलेंस शीट। सो आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट are also known as final account, which consists of two statements. One is income statement, that is your profit and loss account, and second is position statement, that is your balance sheet. Balance sheet is known as position statement because it depicts the state or position of asset and liability on a particular date. जो income statement होती है हमारी, वो पूरे साल की बनती है, ठीक है। तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट के ऊपर लिखा होता है फॉर द ईयर एंडिंग, और पोजीशन स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट, वो हमारी बनती है एट द एंड ऑफ द डे ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट दिन पे क्या पोजीशन है, सो इट रिप्रेजेंट दैट पार्ट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज फाइनल अकाउंट, हियर section 129 governs us and tells us that what the according to this section we are going to prepare the P&L account and balance sheet, and these rules are governed under the schedule 3. So schedule 3 have three parts. Schedule 3 part 1 represent balance sheet. So you need to remember this thing, because in some of the competitive exams this type of question can be asked. So schedule 3 of part 2 represents profit and loss account, and schedule 3 consists of consolidated format for the and the guidelines for the consolidated financial statement. Now let us have a look on the remaining part. Here it is the schedule 3 part 2 represent your form of statement of profit and loss account. Here we need to state the name of the company and the profit and loss for the year ending. Suppose it may be 23rd, 21st March 2022, 2023. So accordingly you need to put the year here. So here we are going to talk about the type of items we have to show them and the sequence where the things are going to be represented in P&L account. So जब हम जो सोल प्रोप्राइटर था उनका हम जैसे P&L अकाउंट बनाते थे इन अ टी शेप अकाउंट, आप सोल प्रोप्राइटर का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे, दिस रिप्रेजेंट डेबिट एक्सपेंस साइड, एंड P&L का दिस रिप्रेजेंट, this is your income side. However, this is only for the sole proprietorship. However, for the companies, schedule 3 part 2 tells us the format and the sequence of representing each and every item in the P&L account. So पहली item हमारी यहाँ है revenue from operation. This represent your sales. तो आपको इसी particular format में हमारा particular note number and then figures related to current year and figures related to previous years, because ये हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है जब हम फिगर्स जो है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंगली साथ के साथ साइमल्टेनियसली हम मेंशन करते हैं। सो सबसे पहले इसमें हमारा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिप्रेजेंट द सेल्स पार्ट एंड अदर इनकम रिप्रेजेंट्स द like you have interest received on the investment you have made, so it can be your rent you have received. तो other income में हमारा interest received, rent received, and it can be any discount received, commission received.
So these can be the other incomes. And then we moved on the next part. So after we add revenue from operation and other income, we get total revenue that is represented in the third part. Now we will move on to the next part of the P&L account. Now fourth part begins from the expense side. Expense include different type of things here. Expenses are here. It include first of all cost of material consumed, then purchase of stock in trade, and change in inventory of finished goods, work in progress, and stock in trade. And employees benefit expense, finance cost. Now first of all I will tell you what these 4 points are representing. First three, A, B, and C. There are two type of stock in trade. Basically stock in trade is used for the trading concern. Those do not involved in manufacturing or converting raw material into finished good. So for them, stock in trade is a thing. However, for manufacturing concerns, there are different type of stock we can consider. First is stock of raw material. Second, stock of work in progress. And third, stock of finished good. So accordingly, the things are mentioned here. Purchase of stock in trade mentioned for them, and change in work in progress represent closing stock minus opening stock. This is how you can figure out your change in inventory. For closing stock of each type mentioned here, closing stock of work in progress, closing stock of finished good, and closing stock of stock in trade. So तीनों का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आप चेंज इन इन्वेंट्री निकाल लोगे. ठीक है. और यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड फॉर मटेरियल कंज्यूम्ड accordingly we also calculate in the same way. Then next is your employee benefit expense. Employee benefit expense include like you are paying salary to them, wages to the persons, and you are paying some incentives. You are making payment for provident fund, gratuity. So for all these things, employee benefit expense are considered. तो हम यहाँ पर total amount डालेंगे. ठीक है. However, हम इसके correspondingly यहाँ पे suppose यहाँ पे मैं या नोट नंबर के against ये आपका नोट्स टू अकाउंट का कॉलम है, तो मैं 4 नोट्स टू अकाउंट का कॉलम है 4 नंबर डालती हूँ, तो मुझे नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन 4 नंबर नोट टू अकाउंट में सारा कुछ ये जो मैंने आपको बताया सैलरी, वेजेस, प्रोविडेंट फंड, ये सब कुछ आप नोट्स टू अकाउंट में लिखोगे और वहां से टोटल जो आएगा उसे यहाँ पे आप मेंशन करोगे. देन लास्ट आपकी फाइनेंस कॉस्ट है. फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड्स योर इंटरेस्ट ऑन borrowed fund. Whatever long term, short term borrowed fund you have got, so you need to show them. जो आपने डिबेंचर इशू किया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन एनी अदर borrowing, so you all need to mention here in a finance cost. At depreciation, as you all know, depreciation is charged on fixed asset, and amortization expense means this is a return of part for the intangible asset. Depreciation for fixed asset and amortization for intangible asset. Now this is all together we get the total expense.
सो टोटल एक्सपेंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये देखो ये आया ना आपका, ये कैसे आया, A माइनस बी, जिसको हमने यहाँ पे 3 - 4 किया। 3 क्या था, टोटल रेवेन्यू, एंड 4 क्या था हमारा, टोटल एक्सपेंस। सो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, it can be equivalent to your profit or loss, whatever be the situation। और ये कौन सा, बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो अब आप देखो एक्सेप्शनल आइटम क्या और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है। एक्सेप्शनल आइटम जो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो हमारी नॉट अ नॉट अ नॉट अ पार्ट ऑफ योर ordinary business, not a part of your ordinary business। तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा जैसे फ्लड, earthquake। So this could be your extraordinary item। Exceptional means that can be part of your ordinary business but not conducted every year। सो इसलिए हम इसे एक्सेप्शनल आइटम में एग्जांपल देंगे, जैसे सेल ऑफ मशीनरी और एनी अदर लाइक लॉस बाय थेफ्ट, फायर, or it can be the exceptional or extraordinary item that can happen, loss by theft। So this could be the exceptional item, and extraordinary item like flood, earthquake, which is out of control of the organization and not a part of your ordinary business। Now we are watching here the profit after tax। So after deducting these two, we got profit before tax, then we deduct current year profit or any deferred tax, then we get the profit for the continuing business, and this is then after this in 12th point we show profit and loss count from discontinued operation, and whatever like we are dividing the total business into continued and discontinued operation। तो जो हमने ऊपर तक निकाल लिया 11th पॉइंट तक, वो हमारा कंटिन्यूड ऑपरेशन, जो हमारा बिजनेस का एक सेगमेंट जो चल रहा है। सपोज एक बिजनेस के 2 सेगमेंट है, सोप एंड शैम्पू। तो सोप का बिजनेस वो कंटिन्यू कर रहे हैं, हाउर शैम्पू का बिजनेस उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आए वो यहाँ पे लिखेंगे, और उस पे कितना टैक्स बना है वो यहाँ पे 13 पॉइंट पे मेंशन करके, जो 14 पॉइंट आएगा ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और 11th पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन। तो 11th एंड 14 को ऐड करके ये हमारा जो आएगा फॉर द पीरियड। अब इसमें हम अर्निंग पर शेयर, यहाँ तक आपका ये ऑलमोस्ट हो गया। प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास अर्निंग पर इक्विटी शेयर हमें शो करनी पड़ती है, बेसिक एंड डिल्यूटेड। बेसिक होती है जब हम टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और डिल्यूटेड होती है जब हम प्रॉफिट अवेलेबल फॉर और शेयर होल्डर को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से। तो ये हमारी बेसिक और डिल्यूटेड आ जाएगी। तो यहाँ पे हम आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे। थैंक्स।